जैसे आप सबको पता है कि यूएस को हर जगह पे कीड़ा होता है और वो किसी न किसी कंट्री को मसला करता रहता है। जैसे पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर तो यूएस ने मसले क्रिएट किए हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान के हालात इतने खराब है। उसी तर्ज पे अब वो बांग्लादेश के अंदर भी ये सारी चीजें करने वाला है। मैंने आप सबको क्या बताया था, तकरीबन 3 महीने पहले मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर किया था कि अमेरिका और अमेरिका के जितने भी उहदेदारान है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर करिए, उनकी आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर इंटरफेयर करिए। तो यहाँ पे बेसिकली एक रिपोर्ट हमारे पास आया है कि यूएस इस टाइम पे बांग्लादेश के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है और कर भी सकता है। तो यार यहाँ पे और हम क्या कह सकते हैं कि यूएस ने क्या बात की थी कि भाई यूएस ने ये भी कहा था कि भाई बांग्लादेश के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे। अब वो इनके इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, तो दैट्स मीन कि पाकिस्तान जैसे हालात बांग्लादेश के अंदर भी अब क्रिएट हो सकते हैं या होने वाले हैं। अब वो अब सबको पता चल रहा है कि किस तरीके से अब रिपोर्ट्स आ रही है। तो देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या सच में बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान जैसा हाल होने वाला है। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। Bangladesh is heading for elections. Why should you care? Why should Indians be concerned? Bangladesh has been India's ally in the subcontinent. It was in 1971 with Indian Prime Minister Indira Gandhi's help that Sheikh Mujibur Rahman was able to gain independence for Bangladesh. His daughter is Sheikh Hasina, the incumbent Prime Minister who shares friendly ties with India, especially now Prime Minister Narendra Modi. One reason for this good equation with Prime Minister Hasina has been the crackdown on Muslim fundamentalists in the region, acting against cross-border terrorism challenges, and has been fairly pro-India. The power center in Bangladesh has usually fluctuated between Khaleda Zia of BNP and Sheikh Hasina of Awami League. But it was during Khaleda Zia's government that was the time when anti-India sentiments had escalated to a large measure. Let's take a look at Hasina's tenure. She was elected as the Prime Minister in 1996, 2008, 2013 and 2018. She has had 4 successful terms as the Prime Minister and now aims to return to power. But this time, it does not look too easy, and for 2 reasons. Violence unfolded in different parts of the country. Earlier, it started with massive protests, first by the workers on wage issues, those working for production in international brands like H&M and Zara. And then further violence erupted related to general elections scheduled for January 7th. Political landscape presently in Bangladesh is engulfed in tension. Opposition protesters are demanding that Sheikh Hasina resign. They want a caretaker government. Reportedly, thousands of opposition supporters were reportedly arrested, including former Prime Minister Khaleda Zia, placed under house arrest. And now the Bangladesh top court has continued to uphold the ban on the largest Islamist party, Jamaat-e-Islami, that has the registration cancelled to contest elections for violating the constitutional provision of a secular Bangladesh. While these tensions were unfolding and elections approaching, for some reason, the United States of America got involved and looks too interested in elections in Bangladesh, clearly which is a country's internal matter. But the USA always likes to play the big brother. Here's what happened. US Secretary of State Antony Blinken met the Bangladeshi Foreign Minister in April 2023. Bilateral talks between 2 governments looks all right. But then the US Ambassador to Bangladesh, Peter Haas, met Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal to avoid any untoward violence during the elections. He has urged for free and fair elections in the country. That's not all. The US envoy is urging a meeting of all political parties in Bangladesh, specifically the opposition parties. How many other countries' ambassadors meet chief election commissioners? Quite unusual, if you ask me. Recently, Bangladesh's Foreign Minister A.K. Abdul Momen said any restriction in visa policy is Washington's call, but added in an interview to the Financial Times that the criticism being aimed at Bangladesh is merely propaganda being wrongly spread about their country. To drive his point home, he even drew a parallel with the Western world's intervention in Iraq. Interesting power balance background here for you. USA has regularly criticized Sheikh Hasina's government, accusing it of malpractices, rigged elections and abuses. In 2021, the United States of America announced sanctions against the Rapid Action Battalion of Bangladesh, which is a special force unit. In September 2023, USA imposed sanctions again against those allegedly undermining the election process.
Biden reportedly omitted Bangladesh from democracy summits earlier. There have been signs of awkward behavior and interactions in Washington for a World Bank meeting when Sheikh Hasina had visited. But the USA has also increasingly invested in Bangladesh so that China's influence reduces. There have been defense deals, agreements in manufacturing and in industries. American companies are keen to invest in Bangladesh in IT, education, healthcare, energy, infrastructure in the country. USA has become their biggest investor, specifically in gas and petroleum. But then came this cover story by the Time magazine, based in America, featuring Sheikh Hasina in November, calling her hard power, Sheikh Hasina, and the fate of democracy in Bangladesh. This raised eyebrows by netizens in Bangladesh for seemingly negative connotations aimed through the image. Though articles covered multifaceted tenure of the Prime Minister, many asked, is this simply about election coverage or much more behind the scenes? But this is not just about United States of America. Here is the triangle. USA may want to have dominance in Bangladesh, which is getting increasingly influenced by China, which is another big investor, specifically in infrastructure like in Belt Road Initiative in Bangladesh, power plants, textile, construction, and a Vision 2041, where China has promised Bangladesh to turn it into a developed nation. Then there is Russia, keen to forge a stronger equation. Recently, a Russia-Pacific fleet squadron rolled into Bangladesh Chattogram port for the first time in 50 years. The Russian embassy called it a major milestone for Bangladesh-Russia relations. A nuclear power plant is in the works. Putin's government is reportedly lending a hand to make sure that happens. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov lauded Bangladesh for not giving in to the pressure from the United States of America, upping trade and investment up a notch in the region, and hinted that certain outside parties are meddling where they should not, calling it counterproductive and unacceptable. Anybody's guess who Russia's foreign minister was referring to. So where does India and Bangladesh stand here? There is, of course, an ancient civilizational connection. Then a collective fight in undivided India's freedom struggle. 1971 liberation war against Pakistan, and presently good equations between two governments. No other nation has this level of history and friendship that India has with Bangladesh. There have been visits by Sheikh Hasina to India and even with former Indian Prime Ministers like Dr. Manmohan Singh to Bangladesh. About religious minorities, specifically the Hindus facing persecution in Bangladesh, when 10 temples and 80 shrines were targeted during the Durga Puja celebration in Bangladesh, it was Prime Minister Sheikh Hasina who addressed the matter and has spoken up to assure the Hindu minority who are regularly targeted by Islamists in the country. Recently, the two countries started bilateral trade in rupees. Agartala-Akhora rail link, which connects India's northeast with Bangladesh, is a significant testament to this collaboration. During the G20 summit held in New Delhi, India played the mediator to ease tensions between the USA and Bangladesh. India definitely is not keen on diplomatic conflict with this country. India's Foreign Minister, Dr. S. Jaishankar, made it very clear that this, in fact, is a model relationship, especially how our borderland disputes have been settled. In the past few years, reports have said that under Sheikh Hasina, Bangladesh economy has improved. India's extension of an $800 million credit line to Bangladesh for various projects, including railway infrastructure, procurement of buses, underscores this depth of cooperation. This is beyond regional forums like SAARC, BIMSTEC, and IOR-ARC that there is constant presence of Bangladesh and India. Remember this. With Bangladesh's stability will also mean India's stability in the long run. On a global scale, New Delhi is friendly with Dhaka. Strengthening relationship with Washington, is an old ally of Moscow. Can India find a balance in this quagmire? We will be tracking this developing story. तो वीडियो में देख लिया आप लोगों ने, आपको पता चल चुका होगा इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर ये बात की जा रही है और इंटरनेशनल मीडिया यहां तक बात कर रहा है कि भाई यूएस इस टाइम पे बांग्लादेश के इंटरनल मामलात के अंदर यूएस जो है इंटरफेयर कर रहा है और उनके इलेक्शन में कर सकता है। दैट्स मीन कि पाकिस्तान जैसे हालात अब बांग्लादेश के होने वाले हैं, ये 110% कंफर्म है। अगर यूएस इंटरफेयर कर रहा है बांग्लादेश की इंटरनल मामलात के ऊपर, इंटरनल जो मामलात है यानी जैसे कि इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन खड़ा होगा, या कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा, या दूसरी बात अगर वो
इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करे तो दैट्स मीन के कम टाइम ही रह गया बांग्लादेश के पास कि वो अच्छे तरीके परफॉर्म करे, क्योंकि अब यूएस जब आएगा आपकी कंट्री के अंदर तो फिर आपके हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में रेट्स आप देख ले, हर चीज के रेट इतने हाई है। पहले कर्जा देते हैं और जब कर्जा लेते हैं तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगा देते हैं कि 200 की चीज अब 2000 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की चीज अब 350 रुपए की मिल रही है। पेट्रोल प्राइसेस आपको इस टाइम पे पता है। मुझे यहाँ एक मैं अपनी बात करूँ यार, मैंने अभी 2 साल पहले बाइक ली थी, सितंबर के अंदर ली थी 2021 के अंदर। 140 रुपए का पेट्रोल था, अभी रिसेंटली 340 रुपए तक हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया है। मतलब 200% ऊपर। 40 रुपए की चीज 240 भी नहीं, हमें 340 रुपए की मिल रही थी। अभी तो खैर रेट थोड़े से कम हो, 280 तक आ गए रेट, बट फिर भी आप खुद सोच सकते हैं 40 रुपए का आटा आप कहीं जाके 155 रुपए का मिल रहा है। मतलब 2 टाइम प्राइस हाई हुई है, मतलब एक टाइम नहीं हुई ना। अगर 100 की चीज है तो 200 की होनी चाहिए ना, तो 100 की चीज है तो 300 की हुई है। मतलब अगर मैंने जैसे आपको बताया ना, आटे की प्राइस थी 50 रुपए, अब वो 150 पे पहुंची है, 150 की पहुंची है। 50 रुपीज थी, अब 150। 2 टाइम्स। यहाँ पे भी पेट्रोल का अगर देखते 140 थी तो 240 होनी चाहिए 1%। तो 240 भी नहीं थी, वो 240 की जगह 340 या 350 बन गया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान के हालात क्रिएट किए गए थे यूएस की तरफ से, और मैंने आपको रिपोर्ट दी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि भाई वो हो सकता है कि अभी बांग्लादेश के इलेक्शन में भी इंटरफेयर करे। जब मैंने ये बात की थी कि वो इस टाइम पे बांग्लादेश के आर्मी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, फिर वो आपके इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करेगा, फिर को बोलेगा कि भाई आपकी कंट्री में ये चीज नहीं है, कर्जा ले लो। जब आप कर्जा लेंगे तो फिर आपसे चीजें ले मांगता रहेगा, आपको कर्जा और देते जाएगा, आप कर्जा खत्म करोगे फिर और कर्जा लेगा। तो इसी तरीके से आपके हालात काफी खराब होने की तरफ जाएंगे और बांग्लादेश के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश अभी पाकिस्तान जैसा बन सकता है।